Welcome to all friends for this new chapter we are starting for rotational dynamics class 12 new revised syllabus. तो दोस्तों अभी जो 12 स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र इसका जो सिलेबस रिलीज हुआ है और जो रिवाइज सिलेबस है उसमें रोटेशनल डायनामिक्स इज द फर्स्ट चैप्टर इन द फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम रोटेशनल डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ जो बेसिक टर्म्स है दैट विल बी यूजफुल टू स्टडी दिस रोटेशनल डायनामिक्स इसकी डिटेल जानकारी इस सेशन में हम लेने वाले हैं। तो अभी आपको अगर रोटेशनल डायनामिक्स थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मतलब अभी तक जो 12th में स्टूडेंट थे या 12th आने के बाद जब फिजिक्स का हम बुक ओपन करते थे तो पहला एक चैप्टर आता था दैट इज द सर्कुलर मोशन। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ आल्सो, मतलब जब मैं 12th को था तभी भी वही चैप्टर था और आज तक वही, मतलब इस साल तक 2019 तक जब फिजिक्स का हम बुक्स अगर ओपन करते थे तो पहला हमें चैप्टर मिलता था सर्कुलर मोशन, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ था। लेकिन इस साल में आपका वो चैप्टर चेंज हुआ है। नाउ दिस बिकम्स द रोटेशनल डायनामिक्स। सर्कुलर मोशन मतलब हर एक, मतलब कोई भी टीचर अगर 12th के लिए पढ़ाता है तो पहले एक ही डेफिनेशन थी सर्कुलर मोशन की, डिफाइन सर्कुलर मोशन। मतलब स्टार्टिंग जब मैं भी पढ़ाने के लिए जाता था तो पहले एक ही डेफिनेशन सर्कुलर मोशन, डिफाइन सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of a circle is called as the circular motion। यही डेफिनेशन हम रट के लेते थे बच्चों की तरफ से। लेकिन अभी यहाँ पे सिलेबस रिवाइज हुआ है तो इस लेक्चर में हम रोटेशनल डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और जो रिवीजन हुआ है वो क्या हुआ है, मतलब सिलेबस क्या चेंज हुआ है विच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर, वो हम डिटेल्स में उसकी जानकारी लेंगे। अभी सर्कुलर मोशन ये चैप्टर हमें पहले के सिलेबस में था, अभी के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है हमारे लिए दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। तो चैप्टर फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस द रोटेशनल डायनामिक्स। अभी रोटेशनल डायनामिक्स में 11th में क्या हुआ है आपको, 11th में सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन हुआ है आपको। सर्कुलर मोशन मतलब जो नया सिलेबस था 11th के लिए 2019-20 बैच के लिए, तो 11th के सिलेबस में सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन हुआ है। और जो 12th का पहले का सिलेबस था उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर थर्ड, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट था सर्कुलर मोशन और चैप्टर नंबर थर्ड था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तो ये दो चैप्टर अलग थे जो प्रीवियस सिलेबस के लिए थे, प्रीवियस सिलेबस के लिए थे। अभी these two chapters are combined together, it will combine and that will form the rotational dynamics, that will form rotational dynamics। मतलब हमें चैप्टर का अगर यहाँ पे स्टडी करने का है तो सर्कुलर मोशन की भी स्टडी करने की और रोटेशनल मोशन की, तो दो मोशन की हम चैप्टर कंबाइन करेंगे तो हमें फॉर्म हो जाएगा रोटेशनल डायनामिक्स। और ये चैप्टर हम इस वीडियो सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस रोटेशनल डायनामिक्स आई विल इंट्रोड्यूस फर्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन। जो मोशंस रहते हैं डिफरेंट टाइप्स वो हम पहले इंट्रोडक्शन उसके लिए ये चैप्टर स्टडी करने के लिए जरूरत है। तो हम पहले रोटेशनल मोशन के टाइप कौन कौन से दैट विल सी फर्स्ट। सो वी विल हैव द मोशन, द फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सेकेंड इज कर्व लीनियर मोशन, curve linear motion, third is curve linear motion, third is rotational motion, or we can say first circular motion, fourth is rotational motion, fifth is oscillatory motion, ऑसिलेटरी मोशन। ये हमें 5 टाइप की अलग अलग मोशन है। तो इसके हम अभी लीनियर की मोशन जो है वो हमने 10th में उसके लिए डिटेल्स, मतलब अप टू 10th क्लास वी स्टडीड ऑल द लीनियर मोशन रिलेटेड टू दिस लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन का जो स्टडी हमने 10th तक किया है और उसके बाद कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटर मोशन अभी हमें 11th और 12th में स्टडी करने की।
सपोज एक साइक्लिस्ट है, अगर ये साइक्लिस्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम, इट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ लीनियर मोशन। मतलब ये साइक्लिस्ट जो है अगर स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल कर रहा है वहां पे तो इसको बोलेंगे हम लीनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन, अगर ये साइक्लिस्ट जो कर्व है मतलब जो अलोंग द कर्व पाथ वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम कर्वीलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अगर वो सर्क्यूफरेंस ऑफ सर्कल अगर ये ट्रैवल कर रहा है इस पाथ से तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अभी हम इसके आपके लिए नई मोशन है रोटेशनल मोशन, मतलब अभी तक ये आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है व्हाट इज रोटेशनल मोशन, लेकिन इंट्रोडक्टरी में बोल देता हूँ। रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी रहती है और रिजिड बॉडी में इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल, और जब ये मोशन में रहेगी इट मे बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इट मे बी अलोंग द सर्कुलर। सो अगर ये बॉडी विद द पार्टिकल मोशन में रहेगी तो बॉडी तो मूव हो रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, लेकिन उसके साथ उसके पार्टिकल भी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अ रिजिड बॉडी कंसेप्ट। तो वी विल सी, सो दिस इज द रोटेशनल मोशन, मतलब बॉडी के पार्टिकल और खुद बॉडी दोनों मोशन परफॉर्म करे, दैट इज रोटेशनल मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, एक मेन पोजीशन होगी आपकी, यहाँ पे कुछ तो एक फिक्स सपोर्ट होगा तो मोशन परफॉर्म कर रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑलरेडी वी स्टडीड दिस अप टू द 10th क्लास, कर्वीलिनियर और सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ये अभी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हम। और ऑसिलेटरी मोशन है, इसके लिए एक अलग चैप्टर है, तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करके लेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो वी हैव टू कमांड ऑन ऑल दीज 5 मोशंस, ऑन द 5 मोशंस टू क्रैक योर नीट और जेईई एग्जाम। अगर ये हमें कमांड करने का है 5 मोशंस पे तो वी आर रेडी फॉर क्रैकिंग द नीट और जेईई, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड depends on these 5 different motions. So friends देखिए यहाँ पे अभी this is just an introduction regarding the how many types of motions are there. अभी हम रोटेशनल मोशन जानकारी लेंगे, इसके पहले थोड़ा जो टर्म्स है मतलब जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी, अगर मोशन आती है तो मोशन आने के बाद आपको कुछ टर्म्स मालूम होना जरूरी है वहां पे। तो सिंपली आप वर्ड याद रख सकते हैं, दिव्या भारती पता है आपको? यस, दिव्या, दिव्या, और I think I can say it is the diva, that is panti, so diva, so I can take this di, it is for the displacement, it is for the velocity and it is for the acceleration, so diva। सो आपको ये 3 टर्म्स डिटेल्स में जानकारी आनी चाहिए बिफोर मूविंग टू द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सो अगर ये दिवा है तो डिस्प्लेसमेंट, सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू ईच अदर्स। फॉर एग्जांपल आई विल टेक द स्केलर क्वांटिटी एंड सम दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी इट बिकम द डिस्टेंस, स्पीड एंड acceleration. Vector quantity it become displacement, velocity and acceleration. अभी जब मैं स्केलर और वेक्टर, these are the terms similar to each others but they are different only which has the magnitude and the direction. These quantities are having only the magnitude, so these quantities are called as scalar, and these quantities are having the magnitude as well as direction, so these quantities are called as a vector. So distance you can represent, that is in terms of the meter, displacement that is in terms of the meter, this is the vector quantity, distance is the scalar quantity. Distance अभी जहां पे मैं यहाँ पे suppose person is there यहाँ at the point A and it is moving like this, it is moving like this, this is 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter and 5 meter and calculate the distance and the displacement. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो यू कैन गो थ्रू दिस। सो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब 5 plus 5 plus 5, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15,
20, 25, 30, 35. So it become 35 meter. And the displacement is it is the it is the distance between the starting point and the final point. That is, this is the starting point, this is the final point. So this is the 5 plus 5 plus 5. So it is distance become it is a 10 meters. So this is the difference between the distance and the displacement. Already I have uploaded one video depends on this distance and the displacement. So you can go through this. So you will get the clarification regarding what is the difference between the distance and the displacement. तो अभी ये distance is measured in the meter, displacement is also measured in the meter, but for the displacement it is a vector quantity, this is the scalar quantity. अभी ये जो speed है, speed क्या होगा? So these are the three terms, we have to remember this. So speed is equal to, it is the distance upon time, it is the distance upon time, and acceleration is equal to speed upon time. Displacement, velocity, now velocity it is related to the vector, so don't say it is a distance, this is the displacement upon time, and acceleration it is the velocity upon time. Please note down this, very important to distinguish between the distance, displacement, speed, velocity, acceleration. बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि speed and the velocity they are the same. This distance and displacement they are the same. They are not the same. They are the vector quantity and these are the scalar quantity. So this is the some concept regarding the motion. Now let us see first what is the circular motion. What is the circular motion? Because in this chapter we are studying the two different motion, that is the circular motion and the rotation motion. So before moving to the rotation motion, we will see what is the circular motion and then we will switch to the rotational motion. Circular motion, the important definition, the motion of particle along the circumference of circle is called circular motion. So this is the definition. The motion of a particle, यहाँ पे देखिए मोशन है, मतलब मैं सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे. सो दिस इज द मोशन. किसकी मोशन है? पार्टिकल की मोशन है. और उस पार्टिकल की मोशन ऑन विच पाथ दिस मोशन विल एग्जिस्ट. इट इज अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. It is along the circumference of the circle, that is called as a circular motion. So what is the circular motion? The motion of the particle along the circumference of a circle is called as a circular motion. The motion तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ. किसकी मोशन है? पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट है, उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की मोशन है, लेकिन किस पाथ से है? along the circumference of a circle is called as a circular motion. You can take the examples. The motion of moon around earth. Second, the motion of earth around sun. Third, the motion of satellite around earth. Fourth, the motion of tip of hand hours, minute hours, and second hours in a clock. Fifth example, motion of object tied at one end and moved along a circle. तो ऐसे बहुत एग्जांपल डे टू डे लाइफ में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सर्कुलर मोशन की. फैन मूव हो रहा है तो फैन की जो मोशन है दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर मोशन. उसके बाद जो हम
झूला झूला देखते हैं तो झूला इज द मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सो बहुत एग्जांपल हम याद रख सकते हैं। तो फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल यू कैन रिमेंबर 3 or 4 एग्जांपल if the question is asked define the circular motion and give its example। So this is the simple circular motion definition. The motion of the particle along the circumference of a circle is called as the circular motion and these are the some example listed here। अभी हम graphically represent कर सकते हैं। So this is the circle because object is moving along the circumference of the circle। So this is the circle and suppose this position of the particle is A, then this particle A it is moving along the circumference of the circle, along the circumference of the circle is called as a circular motion। It may be move in anti-clockwise or it may be move in clockwise direction। So this is the particle A is starting to move in anti-clockwise direction and the direction is along the circumference of a circle is called as a circular motion। Please note down this। Now we will see the terms, basic terms related to the circular motion। Just now I have explained the 3 terms: displacement, velocity and the acceleration। So same terms we are defining here। So first term it becomes the radius vector। Radius vector, what is the radius vector? A vector drawn from the center of circle, from center of circle to the position of particle। Now I am seeing always the particle it may be analogous to the object। So the position of the particle is called radius vector। It is also called as radius vector, it is also called as position vector। It is also called as position vector। A vector drawn from the center of the circle, to the position of the particle is called as radius vector। Means if object is performing the circular motion, it is moving from A to B and this is the center of the circle, let the O is the center of the circle and this A is the position of the particle। Then if I will draw the vector which is joining from point O to A and directed toward this A, then this is called as a radius vector। It is also called as a position vector। Simple concept of the radius vector। So radius vector, it is a vector drawn from the center of circle to the position of the particle is called as a radius vector। It is also called as a position vector। So it represents the vector। So vector OA, it is the radius vector। It is the radius vector। It is represented by vector R। Now we will see the another terms। These terms are important because when we are studying the circular motion, these terms are coming number of times। So before moving to the details about the circular motion, you should know the basic concept। So we have the 3 terms: displacement, velocity and the acceleration। So similarly we have the angular displacement। Now what is the angular displacement? It is the angle described by a particle when moving from one position to another position, is called angular displacement। So this is the, suppose particle is performing the circular motion, it is moving in anti-clockwise direction, O is the center of the circle. If I will take the particle is moving from point A to point B, then it will describe the one vector, that is vector R,
this is again the vector r. Then when it is moving from point A to B, it performs or it describes one angle, and this angle is called as a theta. This angle is called as a theta, and this angle is nothing but the angular displacement. It is expressed in radian. It is expressed in radian. So this is the circle, and when the particle is moving from point A and it comes to the same point at the B, which it completes the one revolution. So in one revolution, the angular displacement theta is equal to 360 degree, because the total angle for the circle it is a 360 degree, and this angle it can be given if the particle is moving from A to B. Then when the particle is moving from A to B, we have the relation that is theta equal to arc upon radius. Theta is equal to arc upon radius. Arc is, suppose this arc is S and this is the arc, so this I can express, it is S upon theta. So S upon arc, so S is equal to R into theta. If I will consider the small values, so delta theta, suppose particle is covering a very small displacement delta theta, and it will cover the distance delta S, and this is the delta theta. Then I can get this delta theta is equal to delta S upon R. So delta S is equal to R into delta theta. So this is the expression for the angular displacement, and this delta S is equal to R into delta theta, that is in the vector quantity. So this is the vector quantity. So that is in terms of magnitude, and this is in terms of the vector notation. Now, as it is a vector, angular displacement it is expressed in the radian, and it is a vector quantity. Angular displacement is a vector quantity, so it has a direction. This expression will come for the magnitude, लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन उसकी फाइंड आउट करने की है तो मैं यूज करूंगा राइट हैंड थंब रूल. व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? व्हाट इज द राइट हैंड, फर्स्ट नोट करके लीजिए, उसके बाद हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. So this is the displacement, this is the angular displacement, and magnitude we have represent. But what is the direction? The direction is represented by using the right hand thumb rule. And what is the right hand thumb rule? Suppose that now I am explaining the right hand thumb rule that will be useful to represent the direction of the angular displacement. Suppose the axis of rotation is kept in your right hand with the fingers are curled. It is like this, with the fingers are curled and the thumb is the outstretched. If the curved finger indicate the direction of circular motion, then the outstretched thumb it will indicate the direction of the angular velocity. Very simple. If the axis of rotation will be held in the right hand is such that the fingers are curled around this axis of rotation and the thumb is outstretched, then if the curved finger indicate the direction of circular motion, then outstretched thumb will indicate the direction of the angular displacement. This is the right hand thumb rule, which is used to represent the direction of the angular displacement. Now next we will see angular velocity. Angular velocity. Angular velocity is similar to the basic concept already we discussed. It is the rate of change of angular displacement with respect to time. Rate of change of angular displacement with respect to time is called as a angular velocity. It is represented by omega, and this omega is equal to, if we are considering the instantaneous angular velocity, then limit delta t tends to 0, delta theta upon delta t, that is equal to d theta upon dt.
d theta upon dt. This is the expression for the angular velocity, and we are considering this omega d theta upon d theta. In terms of magnitude, we can take d theta upon d theta. In terms of vector, it is vector d theta upon dt. So unit is the unit for the theta is the angular, it is angular displacement, and it is radian. So unit is radian per second, and dimensions are m raised to 0, l raised to 0, t raised to minus 1. This is the angular velocity. Second, we will see it is the angular acceleration. This angular acceleration, it is defined as, it is the rate of change of angular velocity with respect to time. Means it is denoted by alpha. This is alpha, and alpha is limit delta t tends to 0, that is d omega upon dt, or it is d omega upon dt. We have the two types of acceleration there. One is the average acceleration, and second is instantaneous acceleration. Average acceleration and instantaneous acceleration. So what is the average acceleration and what is the instantaneous acceleration? Suppose particle is performing the circular motion in the anticlockwise direction, which is moving from point A to B. During the time t, during this t0 time, it has angular velocity, it is the omega 0, and after some time t, the particle has the angular velocity, it is suppose omega. Then average acceleration, it can be given by, it is the omega minus omega 0 upon t minus t0. This is the, means we have the one time, initial time, final time, initial time, initial angular velocity, final time, final angular velocity. So we can get the average acceleration omega minus omega 0 upon t minus t0. But instantaneous acceleration, it represents the acceleration at that particular time, during that only particular time. So it is given by limit delta t tends to 0, delta omega upon delta t. So this is the difference between the average acceleration and instantaneous acceleration. Average acceleration we are considering from one time to another times, and for instantaneous acceleration we are considering a particular given time, and we are finding this instantaneous acceleration. So please note down this. So these are the important terms which are used in the circular motion. The first one is radius vector, second is angular displacement, third is angular velocity, fourth is the angular acceleration. So that four term you should know, and you should know the basic concept and what is the relation. Now let us see the relationship between linear velocity and angular velocity. Now suppose we are considering the particle performing the circular motion, and let the O is the center of the circle. Then initially it is at the position A, and this particle is performing the circular motion in the anti-clockwise direction, and it comes to the position at the point B. So let this is the radius vector, this is also the radius vector. Then the particle is performing the circular motion, means obviously it has the angular velocity, and that is nothing but the omega. When the particle is performing the circular motion, so the velocity it performs the linear displacement also. Linear displacement, it is along the curved path, and it has the velocity, and that is the linear velocity. It is given by v, and this velocity v, it is always changing at each position. Means its magnitude, even the magnitude remains same or magnitude doesn't remain same, but the direction is continuously go on the changing, and this direction is, it is a directed to, it is the tangent drawn to that particular point.
tangent drawn to that particular point. Getting? So this is the angular displacement. It is the delta theta, and it will perform the displacement, that is the delta s. So if the particle is performing the circular motion, it has the angular velocity and the linear velocity. Linear velocity, the direction is continuously changing, and direction is how the direction will be there. It is just tangent to that particular point. Then we will see what is the relation between the linear velocity and this angular velocity. We know the magnitude of linear velocity. We know the magnitude of linear velocity is given by v is equal to limit delta t tends to 0. What is the displacement there? Delta s upon delta t. Delta s upon delta t. But looking to this figure, as shown in figure, I can get the value this, but delta theta equal to delta s upon r. Delta s upon r. So I am getting this delta s equal to r into delta theta. Put this value in equation 1. Put this value in equation 1. So v equal to limit delta t tends to 0. Delta s now it become r into delta theta upon delta t. So it is limit, this r is the in magnitude, I can take the constant. This is r delta t tends to 0, delta theta upon delta t. But what is this value? This value is nothing but the omega, that is rate of change of displacement with respect to time. So v is equal to r into omega. This is the relation I am getting, and this is the relation between the linear velocity and the angular velocity. Linear velocity and angular velocity. If the angular velocity it is multiplied by the radius, then it will form the linear velocity. So obviously the linear velocity is having the more value as compared to the angular velocity. So please note down this. This is the important relation, the relation between the linear velocity and the angular velocity. In terms of vector, we can write this vector v equal to vector omega into vector r. Vector v is equal to vector omega, because when it is angular, when it is the particle is at this position, so it perform the angular velocity omega, the direction. Now let us see the another type of the motion, that is it is a type of the circular motion, and that is the uniform circular motion. Uniform circular motion. The definition remains same. What is the definition of the circular motion? If you remember this definition of the circular motion, so we'll see what is the uniform circular motion. The uniform circular motion, first you may remember for the definition of the circular motion, the motion of the particle along the circumference of a circle. The definition becomes same. The motion of particle performing particle, the motion of the particle along the circumference of circle is called along the circumference of a circle. But now the one condition, with constant speed. This is the important. With constant speed is called uniform circular motion. For that uniform circular motion, now I am always writing
uniform circular motion. So the motion of the particle along the circumference of a circle is with a constant speed is called as a circular motion, or it can be defined like this. It is the periodic motion. It is the periodic motion with constant with constant angular speed. With constant angular speed is also called as a uniform circular motion. Periodic motion, the motion which will repeats in equal interval of time, that is called as periodic motion with a constant angular speed. अभी एक आप एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे. When you are switch on or switch off the fan, suppose अभी आप देख सकते हैं, मतलब ये वीडियो आप देख के भी आप कर सकते हो. आपका फैन पूरा पहले ऑफ कीजिए, दैट इज एट द रेस्ट. उसके बाद फैन का स्विच ऑन कीजिए. सो एंड सी योर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, जो फैन है इट इज स्टार्टिंग द मूविंग विथ द स्पीड. इनिशियली इट इज एट द 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड. नाउ आफ्टर दैट और इट इज 0 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी. उसके बाद फैन क्या हो जाएगा, अभी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. अभी स्पीड कांस्टेंट नहीं है. तो आपने अगर एक 2 स्पीड और 3 स्पीड और 4 स्पीड और 5 स्पीड में आपने फैन रखा है, तो जब तक वो एक पर्टिकुलर स्पीड एक्वायर नहीं करेगा तब तक फैन आपका स्पीड उसकी इंक्रीज होती जाएगी. और एक बार स्पीड इंक्रीज हो गई तो दैट विल बी रिमेन द कांस्टेंट. फिर फैन क्या होगा, एक कंप्लीटली रिवोल्यूशन वो कॉन्स्टेंटली रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा. अभी आप देख सकते हो, अगर एक बार फैन ने स्पीड अचीव की, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, उसके बाद अगर एक 5 सेकंड में वो 5 रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में वो फिर से 5 रोटेशन कंप्लीट करेगा. सो दैट बिकम नाउ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन जब फैन आपने ऑन किया है तो उसके बाद उसकी स्पीड, जब मैं ऑन कर रहा हूं तो स्पीड बढ़ रही है, वहां पे स्पीड बढ़ रही है, मतलब दैट इज अ सर्कुलर मोशन. बट जब वो पर्टिकुलर स्पीड एक्वायर करेगा और 5 सेकंड में 5 रिवोल्यूशन, 5 सेकंड में 5 रिवोल्यूशन, whenever I will take a 5 second, the count of revolution will be the 5 second. So that in that time it is a uniform circular motion. उसको कहेंगे uniform circular motion. मतलब अगर ये पार्टिकल है, this particle is moving in a circular motion, तो इसकी v, अगर यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया v, if it is remain same, then that is called as a uniform circular motion. अभी ये uniform circular motion है, it is also called as a periodic motion with a constant angular speed. That is also called as a periodic motion. So we will see first what is the time period. Now this uniform circular motion is the accelerated motion because its motion is always changing, direction is always changing, so it is also called as accelerated motion. And this uniform circular, it is a periodic motion. That motion is a repeats in equal interval of time, that is called as a periodic motion. So we will take the time period, the definition. What is the definition of the time period? The time period is a time taken by a particle to complete the one revolution is called as a time period. The time taken by a particle along the circumference of a circle, क्योंकि ये circular motion perform कर रहा है, so you can define it technically like this. The time taken by a particle along the circumference of a circle with a constant speed is called as a time period of that particle. Or this time period is given by this t is equal to, it is performing along the circumference. So circumference of circle divided by velocity. So circumference of circle, we know if it is a circle, so circumference of a circle, it is given by, it is the 2 pi r. So 2 pi r upon velocity is v. We know the relation for the v, that is v is equal to r into omega. So t is equal to 2 pi r upon r into omega. R get cancelled. So t is equal to 2 pi upon omega. This is the relation for the time period and the angular velocity. Now we will define the terms, that is the frequency. This is the time period, and now we will define this is for the frequency. So frequency is what? It is the number of revolutions completed in 1 unit time, or number of revolution completed if the unit time is 1 second. So 1 second number of revolution completed in unit time is called as a frequency. It is given by n, and this frequency, it is the reciprocal of the time period. So it is a 1 upon t is equal to omega upon 2 pi. This is the important relation. Please remember it. Number of questions are asked depends on this in the NEET or CET exam. So we clear all the concepts related to the
term. So this is the time period. Time period is a time taken by a particle around the circumference of a circle to complete the one revolution is called as a time period. It is the circumference of circle upon velocity. Circumference of circle, it is given by 2 pi r upon v. So v is equal to r into omega. But v is equal to r into omega. Put the value of v. So t is equal to 2 pi r upon r into omega. R get cancelled. So t is equal to 2 pi upon omega. Frequency, it is the number of revolutions completed in one unit time, that is called as a frequency, and it is a reciprocal of the time period. So frequency is equal to 1 upon t is equal to omega upon 2 pi. So this is about the introduction regarding the circular motion and the uniform circular motion. We can take the example. I forgot to explain the uniform circular motion example. The motion of the moon around the sun, the motion of the moon around the earth, the motion of the earth around the sun, the fan with a constant speed when it is moving. These are the example for the uniform circular motion, and these are the terms, time period and the frequency. These are the two terms which are related to the uniform circular motion. तो इस लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन, जो बेसिक मोशन के टाइप्स, दैट इज द लीनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, उसके बाद रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया है. उसके बाद सर्कुलर मोशन डेफिनेशन, टर्म्स, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन. Also we explain the relation between the linear velocity and the angular velocity, and then we move toward this uniform circular motion, definition, examples, and the definitions of the time period and the frequencies. So these are the importance when we are studying the rotational dynamics. उसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद एंगल ऑफ बैंकिंग, कोनिकल पेंडुलम्स, और जो मोशन है व्हेन इट इज मूविंग इन अ वर्टिकुलर, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी और एनर्जी एट द मीडियम पोजीशन, बॉटम पोजीशन और एट द टॉप पोजीशन, सो दैट विल सी. सो इस लेक्चर में अभी यहाँ तक ही हम स्टडी करेंगे. तो नोट्स बना के लीजिए, जब आप वीडियो देखेंगे पेपर के ऊपर लिख के लीजिए पूरा, और उसके बाद जो कुछ कंसेप्ट है पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए. चैप्टर सिंपल है, ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर कंबाइन किया है मतलब हमें बहुत मुश्किल है, सिलेबस बहुत डिफिकल्ट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. चैप्टर सिंपल है, लेकिन गो विद द कंसेप्चुअल क्लियरेंस, क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्लियरेंस नहीं गए, रट्टा मार के गए, तो उसका यूज नहीं होगा और फिजिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा. तो फिजिक्स सब्जेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू क्रिएट योर आपकी जो मतलब लाइक है ना, उसमें वो आनी चाहिए. आपका जो इथुजियम है उसमें वो आना चाहिए, तभी फिजिक्स सब्जेक्ट आपको सिंपल रहेगा. और मैं हूँ आपके लिए जो फिजिक्स आपको बहुत ही इजी करके लूंगा. तो आप बने रहिए. अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको वीडियो लाइक हुआ है, आपने कुछ तो नई बात आपने आज आपके दिमाग में बैठ गई, तो इस वीडियो को आप लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं कल के लेक्चर में.